Good morning, viewers. Today we will discuss comprehension unseen passage in this video. This comprehension unseen passage is part of the syllabus of diploma first year subject English and Communication Skills code 101. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Rajesh Pilot Government Polytechnic College, DAUSA. Comprehension unseen passage. You must have seen this exercise in many of the school papers of English and also in competitive exams as well. Why you think it is generally frequently asked question in most of the papers of English subject? It is an exercise that tests students' ability of understanding a given text, also to derive meaning from the text which was not read or seen earlier, hence called unseen passage. So, before understanding or before going to an exercise of comprehension, first of all, it is necessary to understand what is a comprehension. So, now let's look at what is a comprehension. A comprehension exercise consists of a passage. So, first of all, you need to understand a comprehension exercise consists of a passage. एक passage दिया हुआ होता है जो कि सीन पैसेज भी हो सकता है और अनसीन पैसेज भी हो सकता है. सीन पैसेज और अनसीन पैसेज क्या होते हैं? सीन पैसेज वो पैसेज होते हैं जो आपने अपने कोर्स में कहीं पढ़े हों, जबकि अनसीन पैसेज वो पैसेज होते हैं जो आपने शायद पहले कभी ना देखे हो ना पढ़े हों. अपॉन विच क्वेश्चंस आर सेट, उस पैसेज पर कुछ क्वेश्चंस सेट किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं to test the student's ability to comprehend the content of the given text. उन क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है? उन क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट की एबिलिटी को टेस्ट करना है. कौन सी एबिलिटी को? कि दिए हुए टेक्स्ट से स्टूडेंट क्या कॉम्प्रिहेंड, क्या समझ पा रहा है, एंड टू इन्फर इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग फ्रॉम इट. और उस पैसेज से स्टूडेंट्स क्या इंफॉर्मेशन डिराइव कर पा रहे हैं, क्या मीनिंग समझ पा रहे हैं. सो ये पूरा उद्देश्य, पर्पस होता है किसी भी कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज का. आई होप इस डेफिनेशन से ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज होती है ये सोलली स्टूडेंट की मीनिंग समझने की, किसी भी पैसेज को समझने की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है. ना केवल मीनिंग समझने के लिए, बल्कि स्टूडेंट्स किस तरीके से उन समझे हुए मीनिंग्स को क्वेश्चंस के आंसर के फॉर्म में अपने शब्दों में लिख पाते हैं, ये किसी भी कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है. नाउ लेट्स लुक एट अ फ्यू हिंट्स. So here are a few hints to read a passage and answer the questions that follow. किसी भी पैसेज के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम क्या हिंट्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें किसी भी पैसेज में मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें. So let's look at the first hint. Firstly, read the passage fairly quickly. What does fairly mean? Fairly means पूरी ईमानदारी से, बिना किसी वर्ड, बिना किसी लाइन को स्किप किए हुए, लेकिन किस तरीके से, स्पीड क्या होनी चाहिए हमारी? क्विकली एंड थरली टू गेट द जनरल आइडिया. और हमें उसे पूरा डिटेल में, थरली से यहाँ मतलब पूरा डिटेल में ना होकर बल्कि पूरी तरीके से पढ़ना है, टू गेट द जनरल आइडिया, ताकि हमें ये पता चल जाए कि वो पैसेज किस पर बेस्ड है. What is the content? What is the theme of the passage? Second, read again. After the first reading, which was quick, now you have to read again the passage a little slowly. Now, आपको कैसे पढ़ना है इसको? A little slowly, थोड़ा धीरे. So as to understand the details. जहाँ फर्स्ट क्विक रीडिंग में आपने केवल एक जनरल आइडिया पता किया था, सेकेंड रीडिंग जो कि थोड़ी धीरे होगी उसमें आपको उसकी पूरी डिटेल्स को अंडरस्टैंड करना है.
You can even underline relevant details using a pen or pencil. अगर आपको लगता है पैसेज में कुछ लाइंस ऐसी हैं जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कुछ डिफरेंट हैं जिनके मीनिंग आपको आते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इस तरीके के वर्ड्स और लाइंस को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं यूजिंग अ पेन और पेंसिल. थर्ड, स्टडी द क्वेश्चंस. अब क्योंकि हमने पैसेज 2 बार पढ़ लिया है, नाउ इट्स टाइम टू स्टडी द क्वेश्चंस एंड देन टर्न टू द रेलेवेंट लाइन्स फॉर आंसर्स. और हमें वापस पैसेज की ओर जाना है और अपने आंसर्स के, अपने क्वेश्चंस के आंसर के लिए पैसेज की रेलेवेंट लाइन्स को पढ़ना है एंड री राइट दैम इन योर ओन वर्ड्स. और ज़्यादातर कोशिश ये करिए कि आप पैसेज की लाइन्स को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें. लेकिन आपको लगता है कि अगर सेंटेंस पूरा कंप्लीट है और एज इट इज़ लिखा जा सकता है, तो आप पैसेज की उन लाइन्स को एज इट इज़ कॉपी भी कर सकते हैं. सो आई होप फ्रॉम दिस स्लाइड इट इज़ क्लियर, आपको ये समझ आ गया होगा कि कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज क्या होती है, क्यों होती है और किस तरीके से की जानी चाहिए. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स अ सैम्पल कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज. So here is the specimen of a comprehension exercise for you all. Read the passage below and then answer the questions which follow it. Now, how to read it? The first reading will be quick, so we will quickly read it together. You also read it from the slide. I will also accompany you in reading the text. Clouds are an essential part of the weather conditions which exist around us. Warm air rises upwards in the atmosphere, carrying with it dust and moisture from evaporated surface water. At higher altitudes, the air is cooler and the vapor in the warm air reaches its dew point where it changes either to small particles of ice or into water, thus forming clouds. Since cloud formation takes place at different heights and temperatures, clouds are of different types. There are basically 3 main types of clouds. Up to about 1 to 5 kilometers from the ground, we generally see the first type called the stratus cloud. On occasions, it is the grey stratus clouds which bear light rain. In colder areas, the water in these clouds freezes, thus resulting in snowfall. Slowly rising warm air produces these clouds. Above these and up to about 4 to 5 kilometers lie the cumulus clouds. The fluffy shapes are a result of quickly rising warm air. Above the cumulus clouds at an altitude of about 14 kilometers float the cirrus types of clouds. Cirrus clouds are wispy clouds formed at such a high altitude that they contain only ice crystals. Lying between these 3 main types of clouds are other types like the stratocumulus, altocumulus, cirrocumulus, altostratus and cumulonimbus clouds. So it was the fair quick reading of the passage. Now what we have to do, what was the second step that I told you earlier? The second step would be to read it a little slowly so as to get the details. So what जनरल आइडिया डिड यू गेट फ्रॉम द फर्स्ट रीडिंग? पहली बार की जो हमने क्विक रीडिंग करी उससे आपको क्या जनरल आइडिया मिला? ये पैसेज किस बारे में है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पैसेज? दिस पैसेज इज़ अबाउट क्लाउड्स. हमें ये पता चला कि ये पैसेज क्लाउड्स के बारे में है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड्स हम डिस्कस कर रहे हैं. क्लाउड्स के अंदर क्या है हम वो डिस्कस कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें पता चली. नाउ वी विल गो बैक टू द रीडिंग ऑफ द पैसेज विच विल बी अ लिटिल स्लोली. So, now read again with me. Clouds are an essential part of the weather conditions which exist around us. Warm air rises upwards in the atmosphere, carrying with it dust and moisture from evaporated surface water. At higher altitudes, the air is cooler and the vapor in the warm air reaches its dew point where it changes either to small particles of ice or into water, thus forming clouds. Since cloud formation takes place at different heights and temperatures, clouds are of different types. There are basically 3 main types of clouds. Up to about 1 to 5 kilometers from the ground, we generally see the first type called the stratus cloud.
On occasions, it is the grey stratus clouds which bear light rain. In colder areas, the water in these clouds freezes, thus resulting in snowfall. Slowly rising warm air produces these clouds. Above these and up to about 4 to 5 kilometers lie the cumulus clouds. The fluffy shapes are a result of quickly rising warm air. Above the cumulus clouds at an altitude of about 14 kilometers float the cirrus types of clouds. Cirrus clouds are wispy clouds formed at such a high altitude that they contain only ice crystals. So now what you can do, you can underline the different types of clouds, the three main types of clouds. What are their specifications? What is unique in all these three different types of clouds? Also, how clouds are formed, you can underline those lines which were in the first paragraph of the passage. Now let's look at the last two lines, last paragraph of the passage. Lying between these three main types of clouds are other types like the stratocumulus, altocumulus, cirrocumulus, altostratus and cumulonimbus clouds. So now you have get the details of the passage. So now what is the third step of doing the comprehension exercise? We have to study the questions. So now let's look at the first question. How does clouds formation take place? So where is the answer? The answer in the first paragraph of the passage. Just look at the ending part of the first line of the first passage. Warm air rises upwards in the atmosphere, carrying with it dust and moisture from evaporated surface water. At higher altitudes, the air is cooler and the vapor in the warm air reaches its dew point, where it changes either to small particles of ice or into water, thus forming clouds. So this is the process of cloud formation. Now, because the lines are quite long, you might find it difficult to write it in your own words. So you can copy it from here because the answer is complete within these lines. Now let's look at the second question. Why are there different types of clouds? The reason, it is not asking what are the different types of clouds. It is asking why are there different types of clouds? Why? The reason. So the reason is in the second last line of the first passage. Since cloud formation takes place at different heights and temperatures, clouds are of different types. Understood? Now let's look at the third question. What do cirrus clouds contain? So the answer will be definitely in the second paragraph of the passage. So let's look at the last line of the second passage, which states, cirrus clouds are wispy clouds formed at such a high altitude that they contain only ice crystals. So, for the answer, you do not have to write the whole line. You can only write the answer, and that is cirrus clouds contain only ice crystals. Fourth question. What are three main types of clouds? Now, here it is asking for the main types of clouds only. So what are the three main types of clouds? Just look at the second paragraph of the passage and look at those words that are in single inverted commas. So the three main types of clouds are stratus clouds, cumulus clouds and cirrus clouds. Now the last question. What do slowly rising warm air and quickly rising warm air respectively produce? Again, go back to the second paragraph of the passage and look at the fourth line of it. Slowly rising warm air produces these clouds. Which clouds? कौन से clouds के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में इस लाइन से जस्ट पहले बात की गई है? तो इससे जस्ट पहले हमने कौन से क्लाउड के बारे में बात करी है? स्ट्रैटस क्लाउड्स के बारे में. तो slowly rising warm air produces stratus clouds. And quickly rising warm air, just look at the fifth line.
The cumulus clouds, the fluffy shapes, are a result of quickly rising warm air. So the answer is not the fluffy shapes. The answer is the cumulus clouds. So now you have to rewrite the answer in your own words, and I have done it for you. So look at the answer of fifth question. Slowly rising warm air produces stratus clouds, and quickly rising warm air produces cumulus clouds respectively. So here was a sample comprehension exercise for you all to let you know how a comprehension exercise should be done. See, these are just guidelines which you may follow for better marks, for a good understanding of a passage, and how to write answers effectively and correctly. If you have any queries regarding this comprehension exercise, regarding this video lecture, you may comment below. Thank you very much.